Students are protesting in India after a reputed national entrance exam was scrapped. एनटीए की तरफ से कराई गई हर परीक्षा पर अब सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। अरे सर बच्चों ने नंबर खराब कर दी। 641 नंबर है मेरी बेटी के। 641 वी वर अश्योर्ड कि कम से कम एडमिशन तो मिलेगा। अब तो पता ही नहीं है क्या हुआ। क्या करें? कहाँ जाएं? एनटीए एजेंसी जो है वो एग्जाम्स ना ही कंडक्ट कराए, अगर वो नहीं करवा पा रहे हैं, एक्नॉलेज करें कि हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। एनटीए एज अ कांसेप्ट इज अ फेलियर। यस एनटीए पे हमारा किसी का ट्रस्ट नहीं है। एनटीए पे इस टाइम टेलीग्राम पर पेपर लीक होना, ऑनलाइन पेपर लीक होना, इसके ऊपर भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। सर इट्स नॉट ओनली अबाउट 24 लाख नीट स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट होल फैमिली। फिर सर जो बोर्ड्स का प्रेशर, फिर नीट में परफॉर्म करने का प्रेशर, तो सर बहुत सारे लोग तो मेडिकल ही नहीं लेंगे इस चक्कर में। सर ऐसे क्वालिटी डॉक्टर्स बनेंगे जिनकी क्वालिटी कुछ नहीं है, जो ऐसे ग्रेसिंग मार्किंग करके अंदर गए हैं, जब वो डॉक्टर्स बनेंगे तो कैन यू इमेजिन द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। आपको क्या लगेगा, आप अगर कोई ऑपरेशन करवाने जाएगा, क्या वो वापस लौट के आ पाएगा? हमारे पास इतने सारे केसेस होते हैं, मतलब हमारे मतलब नॉन में कि भाई किसी को और का पेशेंट इसका स्टेंडल है, उसका इंटेस्टाइन निकलवा दिया, उसका किडनी निकलवा दिया। सर ऐसे केसेस, ऐसी सिकनेस हैपनिंग इतनी बढ़ जाएंगी, वी कैन नॉट इमेजिन। The National Eligibility-cum-Entrance Test medical exam has sparked outrage among lakhs of students across the country. This year's results, released on June 4th, showed an unmatched 67 students achieving perfect scores of 720 on 720, raising concerns as past years saw only 1 to 3 such scores. Questions were raised about seemingly impossible scores of 419 and 418, leading to allegations of malpractice and paper leaks. The National Testing Agency admitted that 1,563 candidates received grace marks due to delays at exam centers and a physics question with 2 correct answers, but insisted the exam's integrity was intact. However, on June 13th, the Supreme Court cancelled these compensatory marks, deeming them arbitrary and unfair, and offered affected students the chance to retake the test on June 23rd. Despite the chaos, the court refused to postpone the counselling process set to start on July 6th. There is chaos in terms of whether Re NEET would be conducted. Would the scores be evaluated and published again? And how would the counselling process be conducted? With students in a state of uncertainty, we are here with Dr. Anand, the CEO of Fundabox, to answer some of these questions. He has been helping students prepare for NEET for over 8 years. Let us talk to him to understand the students' concerns and the future implications of the medical entrance exam. Thank you so much, Dr. Anand, for joining us for this interview. And firstly, we genuinely want to know your opinion about the Education Ministry, especially because today the oath taking ceremony took place. How do you see, should the Education Ministry resign? What should be their response regarding the whole scam? See, I think whatever they are doing right now also is a very delayed response, and they're still not doing anything about it. The whole thing started with the NEET UG. We kept screaming that there has been some discrepancy in the examination. There has been some problems. It should be looked upon. Then NTA comes in and publishes the result exactly on the day of the election day result, so that everything is hidden. And then they give a press release where they give 718 marks, 719 marks. And then when we ask questions to them, then only they say, oh, we have given a grace marks also. So nothing about this exam or the way the result has been interpreted makes sense. And after the NEET fiasco, UGC NET exam got cancelled the day after it. CSIR NET exam got postponed again due to paper leak, and NEET PG, which is supposed to be a very prestigious exam conducted by an NBE, that also got postponed. Matlab 10 hours before the exam. So we had students, we were taking a mentorship session, we wished them best of luck, and I went out with friends, and around 10 p.m. we see a press release that the exam is cancelled. Matlab, what kind of havoc that has been created with the entire education system? I have never seen this ever in my entire career, or ever since I was a kid also. So this is a fiasco, and it should be
dealt with very firmly. And yeah, whosoever responsible, be it the NTA, be it the ministry, should resign and take responsibility and amend it as soon as possible, because the future of lakhs, now I cannot say lakhs, it is crores of students at stake. So very, very important step has to be taken, or the sanctity of exam can never be trusted. All we talk to our students, everyone is saying that, sir, how do we trust कि अगली बार ऐसा नहीं होगा? How do we believe in the government agencies? मैं दोबारा तैयारी करूं, एक साल जी जान लगा के सब कुछ छोड़ के, and this is what I get out of it. So definitely it has to be dealt with very firmly. Whosoever is responsible should take responsibility and resign. Also, your students have filed petition in the High Court. Can we know more about it? What is the request? What have they Exactly. So basically, there are three agenda that my students have filed the petition. That obviously the case was heard there in High Court, and eventually it got transferred to the Supreme Court, which will be heard on 8th of July. So we had three requests with the Honorable High Court and now with the Honorable Supreme Court. The first one is that there should be a clear-cut, thorough checking whether the paper was leaked at a mass level, and if it is leaked at a mass level and cannot be contained, there should be reconduction of the examination. Secondly, the grace marks number that they said कि 1563 students got the grace mark and they reconducted their exam also. तो उसमें भी मुझे बहुत डिस्क्रिपेंसी दिखती है, because paper leak is not the only issue because of the high cutoff, which resulted into the high cutoff. It is the result republishing also. मतलब I believe there are at least 20,000 plus students who must have been given grace marks. Okay. And once that grace marks is rectified, the cutoff would considerably go down. So we would request the Honorable Supreme Court to put an independent committee in place where the OMR sheet marks versus the actual scorecard should be tallied and the entire result should be republished, and that would bring relief to a lot of students who deserve to get into medical college but are not getting a seat right now. And the third petition that we have is still all these proceedings are not fulfilled. Obviously, this would take another week or 2 weeks time, but NTA is very much in a hurry to conduct the counselling, and they are trying to complicate things even more. So till everything is not sorted out, there should be an absolute stay on the counselling process. So these are the three requests that we are appealing to the Honorable Supreme Court. Let's see what happens. So can you tell us why do you think that around 20,000 people have got grace marks? Yeah, I have been teaching in this category for over 8 years now. I was a medical student myself. I cracked this exam. So I know whenever year on year cutoff increases, it increases to 5 marks, 6 marks, 4 marks, 3 marks. There is in no possibility it would increase to 50 marks. The average IQ of student cannot increase overnight. And plus, the thing is that number of students appear. NTA had said that the syllabus was reduced. The syllabus that they made was more complicated. People did not know what to study because there was no clarity on the side of NTA. So syllabus reduction doesn't make sense. Secondly, they said that the number of students who applied for the NEET exam was 3 lakhs higher. In 2023 also 2.5 lakh students added to it. So that doesn't also add to it. And then they said that paper difficulty level was easier. But again, all the experts, if you will talk to, the paper difficulty level was at par with the paper difficulty level of 2023. तो या तो बच्चे अचानक से कोई च्यवनप्राश खाने लगे और इतने स्मार्ट हो गए सबके सब, तो या तो वो है, या देयर हैज बीन अ मैसिव ब्लंडर with respect to NTA. Firstly, they said they had the established formula for the grace marks. Now the committee said कि इन्हें तो formula ही लगाना नहीं आया. Formula लगना था unattempted question पे, and they put the formula onto the entire. So someone who is getting 500 marks got 720 marks. So what kind of maths NTA did? I am skeptical about everything that has NTA done so far. So, yeah. Also, there is a lot of skepticism ki how did people get 719, 720 score? Mathematically, it's wrong. Can you help us explain that? Ki why is it wrong for somebody who has not attempted NEET, let's say? So basically what happened was, initially, there was
some disparity in the centers like बहादुरगढ़ और वैसे वैसे, ठीक है. तो वहां पे ये बोला गया कि the paper was given a bit late, 15-20 minutes late, ठीक है. Now at that time NTA denied नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, it was all fair and square, ठीक है. But when they published the result, we saw the scorecard of 718 and 719, which is not possible because the total examination is for 180 question. Each correct question carries 4 marks, that is 720 marks. So if you leave one question, your marks can either be 716, and if you do one question wrong, your marks can either be 750. 718, 719 cannot be done. So when this got out, then we pointed out, then NTA said कि नहीं हमने तो grace marks दिया है based on the judgment which was an online exam in 2018 of a CLAT, and उनके basis पे इन्होंने grace mark दिया. But खैर that has been taken off, but I am still skeptical that it has not been done properly. So there are the entire result has to be scrutinized and then republished. So there's a lot of doubt about the whole process of NTA. Exactly. Nothing about NTA makes sense. This year they gave an additional window for people to apply. So 24-25,000 people applied. I speak to students all the time and they are saying कि सर सारे इंस्टीट्यूट के बच्चों का एक ही सेंटर पड़ा था, and all of them were doing it like it was a class test, and coincidentally the CCTV cameras were also not working. So much chaos has been around this exam that nothing points out to it as a fair exam. So definitely. Also, at least now the Supreme Court has said that the counselling process will go on. We have not halted that. What would it mean for the students? मतलब अब यहाँ पे तो जो लोगों के results आ गए हैं, they must be skeptical. आपके students भी आपको of course पूछ रहे होंगे. So basically what happened, अभी सबसे पहले मतलब we are not even able to teach in our classes because everyone is like हम क्या करें, हम Re NEET की तैयारी करें या हम 2025 की तैयारी करें, and अगर हम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो what is the guarantee कि इस बार कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. तो द प्रॉब्लम इज वी ऑल्सो डोंट नो द आंसर टू इट कि अभी क्या होगा एग्जैक्टली तो नहीं पता है, बट बेस्ड ऑन द प्रीवियस जजमेंट्स ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इट इज बीन सेड दैट Re NEET would be a possibility only if it is proved in the courts that the exam has been leaked in such a level that it cannot be rectified. मतलब अगर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो बोल देता है कि नहीं सर 20 लोगों का पेपर लीक हुआ था, हमने इनको डिबार कर दिया, आप रिजल्ट पब्लिश कर दो, देन तो Re NEET इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. बट इफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सेज कि नहीं सर इतने मैसिव लेवल पे ये लीक हुआ है कि वी कैन नॉट कर्टेल द इवेंट, एंड देन इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट वुड बी फोर्स्ड टू कंडक्ट अ री-एग्जाम. हैड द रिजल्ट नॉट बीन पब्लिश्ड, द चांसेस ऑफ Re NEET वुड हैव बीन मच हायर, एंड मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कर देती. बट नाउ दे हैव टेकन अ स्टैंड, सो दे आर वेरी मतलब कि नहीं मुझे नहीं करना, नहीं होगा वो अब नहीं करना, बिकॉज सारे एग्जाम इन्होंने पोस्टपोन कर दिए. नीट पोस्टपोन करने में या नीट री एग्जाम करने में क्या जाता है इनका, बट इट इज नाउ ऑन देयर ईगो आल्सो कि हाँ हमने सीबीआई इंक्वायरी डाल दी, हमने कमेटी बना दी, सीबीआई इंक्वायरी की रिजल्ट कौन सी एक दिन में आ जाएगी. तो दैट इज आल्सो मतलब इट इज जस्ट टू क्लियर ऑफ कि नहीं हम तो बहुत मतलब बिना पारदर्शी. तो एग्जैक्टली, सो दैट हैज बीन डन. तो अभी जैसे काउंसलिंग के अगर जो बच्चे जा रहे हैं, एटलीस्ट अज्यूमिंग कि जिनके हाई स्कोर्स आए हैं, दे विल हैव अ बिट एडवांटेज, और जिनके लेट्स से 640 जो पहले कंसीडर किया जाता था इट्स अ गुड स्कोर, दे माइट बी एट अ प्रॉब्लम. तो ये एडमिशन लेवल उन बच्चों के साथ क्या होगा, लाइक व्हाट डू यू थिंक? बेसिकली अगर ये चलता रहता है, मतलब इफ द काउंसलिंग प्रोसीड्स एंड इवन इफ अ फ्यू स्टूडेंट गेट admission and they pay the fees, then taking off the entire exam would be very 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 difficult because the fees would have been submitted. Matlab now consider the mental health of students. I believe there are certain students who actually studied very hard for the exam. Now they have taken a month's break and you expect them to give a re-exam and score the same kind of marks. It is very difficult. Matlab I feel them, matlab the kind of pain that they are going through. मतलब उन्होंने अपने घर में मिठाइयाँ बंटवा दी, सब सेलिब्रेट करते थे रिजल्ट, हर साल लोग उनसे जाके पूछते कि आपने कैसे पढ़ाई की. इस साल कोई उनको पूछ नहीं रहा, सब उनको स्केप्टिज्म की नजर से देख रहे हैं कि अरे आपने कहीं चीटिंग तो नहीं की है. तो आई फील देयर पेन आल्सो. दिस इज, बट देन इफ द रिजल्ट इज लीक्ड
in such a mass level, or the paper is in such a mass level, then it would be fair to conduct a re-examination, but it should be thoroughly dealt with because there are stakeholders involved. अब कोई बच्चा को एडमिशन मिल रहा है, लेट्स से दे आर आल्सो नॉट हैप्पी विद देयर स्कोर ऑनेस्टली, जैसे कुछ 690 नंबर पे एम्स का कैंपस मिल जाता है, अब इसको कोई घटिया सा कॉलेज मिलेगा, so technically they are also not happy with their score, but they are like I'll get out of this mess, I don't want to give this exam again, I don't want to give this again, मैंने पढ़ाई की है, मुझे कोई भी कॉलेज मिलेगा मैं ले लूंगा. They have made peace with it, and now if we ask them to study again, तो वो एक अलग hassle हो जाता है इनके लिए. ये भी है. Also, do you think अगर re-NEET हो रहा है, would it be helpful for the students अगर by chance? मतलब see, now any decision given by the honorable court or any step taken by the ministry would be unfair to a section of student. बहुत सिंपल, अगर आप सब कुछ नीट रीनीट का हटा दोगे तो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट. एक ऐसे बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अभी मिल रहा है, वो नहीं चाहते रीनीट का एग्जाम देना, मेजॉरिटी ऑफ देम, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शन. एक दूसरे बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अभी नहीं मिल रहा, वो चाहते हैं कि रीनीट का एग्जाम देंगे और उनका एग्जाम क्लियर हो जाएगा. तो एवरीवन हैज देयर ओन सेल्फिश इंटेंट आल्सो बिहाइंड इट, बट द थिंग इज मतलब ऑब्वियसली ये क्वेश्चन ही नहीं आता अगर एनटीए ने कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं किया रहता. तो ईदर वे रीनीट हो या नहीं हो, एक सेगमेंट ऑफ बच्चे के साथ तो नाइंसाफी हो रही है. Also, I'm sure that आपके students भी काफी distressed होंगे. Across the country, we can see कि students are distressed. What would be your message to them? You know, उनके students, parents, everybody who's trying to get admission right now, very skeptical about their future. I understand the anxiety what they are going through. I do a 2-hour counseling session for every student one-on-one, and all of them have the same problem, and I do not have answer to any of their queries. But I understand in this difficult situation, the parents would have to do a pivotal role. They will have to speak words of affirmation. उनको सिखाना पड़ेगा कि बेटा ठीक है, इट इज एन एग्जाम, ये जिंदगी डिफाइन नहीं करता, और जो भी होगा वी आर विथ यू, इधर यू गेट इनटू अ मेडिकल कॉलेज और यू डोंट, इट इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ. मतलब ठीक है, we will, it is a very bad time, it is a very crucial time that no one anticipated, but we will get past it, we will get through it. That assurance has to be given by the parents. Secondly, जो बच्चे 650 655 प्लस हैं, उनको मैं रेकमेंड करूंगा कि वो थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें. दे शुड बी इन टच. अगर आपने एक एग्जाम निकाला है और अगर आपको फिर से मौका दिया जा रहा है एग्जाम करने का, तो अगर आप प्रैक्टिस में हो गए तो आप ये एग्जाम में निकाल लोगे. बट आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस, बट आई अंडरस्टैंड इट इज वेरी अनफेयर ऑन योर पॉइंट. बट क्या करोगे यार, एग्जामिनेशन बॉडी जब तुम्हारी ऐसी है तो यू विल हैव टू थिंक अबाउट द वर्स्ट एंड बी स्लाइटली प्रिपेयर्ड फॉर द सेम. तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, थोड़े थोड़े मॉक टेस्ट देते रहो. एंड पीपल who are scoring below 600 or 550 marks, I would recommend them to start preparing for NEET 2025, because अगर NEET हो भी जाता है तो भी इनको कुछ खास फायदा नहीं होगा, because in a month span the amount of effort that you would be putting in, the same amount of effort someone who has scored 650 marks would be putting in on themselves. So his probability of getting selected would be higher as compared to your probability. I'm not saying it's impossible, but the likelihood is very less. So essentially you will be ending wasting up like 2 months of your time. August तक अगर मान लो एग्जाम हुआ, फिर रिजल्ट आया, तो you will be left with 6 months of preparation for NEET 2025. तो अभी से ही मन बना के NEET 2025 की तैयारी स्टार्ट करो. एटलीस्ट जिसके 500 से कम नंबर आए और 500 से ऊपर वालों को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करते रहना चाहिए, जिससे अगर रीनीट होता है तो दे स्टैंड अ फेयर चांस इन क्रैकिंग दैट एग्जाम अगेन. Also, do you think if the state government starts taking care of the NEET exams, they go back to the previous model rather than National Testing Agency, would it be better? I was a part of that previous model. That had its own drawbacks, because अगर NEET एक नेशनल लेवल पे हो रहा है तो उससे ये एक फायदा होता है कि you just have to give one exam. हमारा जब टाइम था AIPMT का, तो उस टाइम पे इंडिया टूर हो जाता था एग्जाम देते देते. तो there was a separate exam for CPMT यूपी के लिए, there was a separate exam for बिहार, there was a separate exam for AIPMT. मतलब बहुत
टायरिंग होता था, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होता था. तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि हर स्टेट अपना एग्जाम कंडक्ट कराए. उसमें states like Bihar, states with lesser college will have a massive disadvantage. So it would be not fair onto their part. But ये जरूर होना चाहिए that the two things. पहला कि नीट का एग्जाम एटलीस्ट साल में 2 बार कराना चाहिए, जैसे AIPMT होता, जैसे आपका JEE एग्जाम होता था. दूसरा, हम लोग के टाइम पे प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम दोनों होते थे. तो देयर शुड बी एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ बैरियर इन सच अ प्रेस्टिजियस एग्जाम. एक प्रीलिम्स आप एग्जाम करो तो भले ही अगर किसी ने चोरी वोरी भी किया होगा प्रीलिम्स से तो मेंस में हट जाएगा. तो देयर शुड बी 2 लेवल ऑफ बैरियर्स एटलीस्ट टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम. तो दिस वुड बी माय 2 रिकमेंडेशन टू NTA. और तीसरा कि क्वेश्चन का लेवल आप थोड़ा एलिवेट कर सकते हो बेस्ड आउट ऑफ NCERT. सेम पुराने हमारे क्वेश्चन की मत चिपका करो, लोगों को लगता है हम पेपर लीक कर रहे हैं. तो the NTA can innovate questions, put in new question, put in better question, put in critical thinking question, so that the competition becomes at par with that of also, ऐसे जो एग्जाम सेंटर्स में जो रेगुलरली प्रॉब्लम होती है इन टर्म्स ऑफ ऑल द एग्जाम्स एंड नॉट जस्ट नीट, लेट शुरू होना, टाइमिंग का प्रॉब्लम, ग्रेस मार्क्स नाउ, हाउ कैन दे डील विद दिस? लाइक any suggestions for that also? टाइम के लिए अगर ये टाइम का प्रॉब्लम है, चीटिंग का प्रॉब्लम है, तो द बेस्ट वे इज टू कंडक्ट एन ऑनलाइन एग्जाम. बट इट इज टफर देन मतलब बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. कहाँ से इतने कंप्यूटर आएंगे, कहाँ से इतने सेंटर्स आएंगे. एंड अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स लेते हो तो पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे सवाल आ जाएगा. तो ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड द NTA's pain also, that dealing with 25 lakh students at a time is a tough task. Conducting their exam fair and square is a tough task, but we will have to improve our resources. People are doing it in China. People are taking massive exam. लगभग 1.5 करोड़ लोग एग्जाम देते हैं चाइना में एक साल. तो one nation one exam is a good concept. There should be pre and mains, and it should be an online based exam, at least dealt with twice a year, because एक दिन आप बीमार हो सकते हो, एक दिन आपकी बस छूट सकती है, ट्रेन छूट सकती है, सेंटर गुम हो जाता है, कुछ भी हो जाता है. तो मतलब एक दिन आपका पूरे साल के मेहनत को डिफाइन नहीं करना चाहिए. तो द कैंडिडेट शुड बी गिवन like some options, थोड़ी liberty to do something else. Yeah, exactly. Also, अब इसका future mainly आप students, the whole medical community also, I would say, how do you see it? Because ये NEET exams this time, it's something कि पहले कभी किसी ने ऐसे NEET के लिए at least नहीं देखा था, and it's one of the most important exams, and now a lot of students are devastated कि अरे करना ही, second option देखने लग जाते हैं because of this. How do you see it? इसका future, how along with different stakeholders? I don't think there would be any massive change, at least for this year, in the exam conducting body or the way they conduct the exam or anything of that sort. They will just say मैंने director बदल दिया, and they will be more cautious this year. So मुझे नहीं लगता कुछ खास change होगा. Secondly, I would say that MBBS is like a glorified profession nowadays. मतलब हमने सपना बेचना स्टार्ट कर दिया MBBS का, and students would realize that there is a barrier to it. मतलब अगर आपने 2-3 अटेम्प्ट ले लिया और उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, there are several different career options that you can opt for, which is equally good, if not better than MBBS, which is equally good. There are international pathways. नर्सिंग करके आप बाहर चले जाते हो, इंडिया के डॉक्टर से अच्छा कमाते हो. डेंटिस्ट्री करके आप यहाँ पे अच्छा कमा सकते हो अगर अपना क्लिनिक खोलते हो. तो people should explore more options also. Then this category would be less burden and the aspirational value would be curtailed. तो वो भी बहुत जरूरी है पार्ट ऑफ स्टूडेंट की. मतलब आप इतने डॉक्टर्स भी बना दोगे तो बाद में इंजीनियर्स वाली हाल हो जाएगी जो 2008-2009 में हुआ था. फिर it will just be a glorified profession with no outcome as such. तो आप डेंटिस्ट्री की तरफ जाइए, आप पैरामेडिकल कोर्सेज कीजिए, आप नर्सिंग कीजिए, आप फिजियोथेरेपी कीजिए, आप होम्योपैथी कीजिए, आप आयुर्वेदा कीजिए, एंड क्रिएट स्कोप so that we can diversify our healthcare ecosystem and work on it. It's an advice for the students also कि explore and see. एक ही MBBS पकड़ना जरूरी नहीं है. बेसिकली इसका सबसे आसान तरीका है go and do certain research. आप रिलाई कर जाते हो YouTube वीडियोस पे, आप रिलाई कर जाते हो आपके पापा मम्मी जो बोल रहे हैं. आपके पापा मम्मी ने दुनिया 30 साल पहले देखी थी,
अब अगले आप जब आने वाले 5 साल में देखोगे तो आप देखोगे दुनिया बदल रही है। पहले जो 80s में डॉक्टर्स थे, 90s में डॉक्टर थे, वो सिर्फ एमबीबीएस करते थे तो भी उनकी क्लिनिक बहुत अच्छी चली जाती है। आज आप अगर सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं करते हो तो आपकी हालत खराब हो रही है। तो यू शुड टॉक टू द पीपल हु आर डॉक्टर्स राइट नाउ। अब मैं ये बात बोल देता हूँ तो मुझे बहुत बैशिंग मिलती है यूट्यूब पे, अरे आपने तो अपनी सीट खराब कर दी, आप डॉक्टर बन गए तो आप दूसरे को बोल रहे हो कि नहीं बनने के लिए। बट यू शुड सी द रियलिटी ऑफ इट, कि आप एफर्ट जितना लगा रहे हो, आप पैसा जितना लगा रहे हो, आप टाइम जितना लगा रहे हो, क्या उसका आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उतना आ रहा है? नहीं आ रहा तो सेटल डाउन फॉर बीडीएस। इट इज ऑल्सो वेरी गुड, यू आर ऑल्सो हेल्पिंग द पेशेंट, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, यू आर रिलीविंग समवन पेन। मेरे सर में दर्द होगा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं दवाई खा के सो जाऊंगा, बट मेरे दांत में दर्द होगा तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं, मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगा, आरसीटी कराऊंगा, तो वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मेरा बैक पेन होगा तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाऊंगा, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आपको और ऑप्शंस देखने चाहिए और अपने हिसाब से, मतलब जैसे अपने आईक्यू के हिसाब से, अपनी फैमिली की जरूरत के हिसाब से। लेट से कोई इंसान नहीं झेल सकता 7 साल 8 साल पढ़ना, तो डू अ पैरामेडिकल कोर्स, 2 साल में डिप्लोमा करो, नौकरी करो और फिर साथ के साथ पढ़ाई करो। तो यू विल हैव टू बी रियलिस्टिक इन योर अप्रोच एंड वी एज टीचर्स विल हैव टू कन्वे दैट। हम एडमिशंस कराने के लिए, कोर्स बेचने के लिए हम बोल देते हैं अरे एमबीबीएस तो सपना है, व्हाइट कोट पहनो, स्टेथोस्कोप पहनो, बट सब लोग तो नहीं निकालेंगे ना। आफ्टर ऑल इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देयर आर 42,000 गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स, लिमिटेड सीट्स हैं। तो चाहे 25 लाख बच्चा दे, चाहे 30 लाख बच्चा दे, देयर इज अ 98% majority of students who will not qualify this exam, so they will have to understand that and move on. Also, last question, any message for especially the students who would be attempting NEET PG, because abhi at least the government has said that एक week में announcement आ जाएगी dates की, we are expecting कि more or less July at least they will write the exam For NEET PG you are saying? Yeah, NEET PG, any advice? I believe it would not be prior to the 3rd week of July मेरे हिसाब से, because अभी 14 जुलाई को ही कोई एग्जाम है और उसके पहले भी ये वाला भी संडे नहीं है, तो आई डाउट दैट इट वुड बी डन either in the last week of July or the first week of August, not prior to that. At least by then Supreme Court's at least one verdict would come up. कुछ तो response आ जाएगा. On 8th of July we will have a clear indication that what the Supreme Court is thinking about this case, based on their judgment, based on how they are responding to it. We will have a clear picture whether there will be a re-NEET or not, and then student will have more clarity. So I think we should wait for the Supreme Court's result to also know what's happening. Everything before that is skepticism, और वो कब किसी भी, it can, मतलब now it is so balanced that you cannot decide which way is right, which way is wrong. Thank you so much for doing this. I hope students find some clarity because of your answers and your guidance that you've given them. Thank you. Thank you.